अब now the next thing that we are going to do is 1 ohm का हमने definition लिखा, उसके सब किलो ओम वगैरह भी लिख दिया. So what is resistance? It's basically 1 ohm का तो definition कर लिया. Conductance क्या है? It is a reciprocal of resistance. Resistance अभी आपको पता है. What is resistance? It's the property of a particular material which flow of current. Yeah. So in the same way, which obstructs the flow of current. You're right, Sumedha. वैसे ही conductance will be the reciprocal of resistance. इसका मतलब क्या? It is a property which allows the flow of current. Okay. But if you want to find in numerical terms, आप अगर जो resistance है उसका reciprocal ले लोगे तो आपको conductance मिल जाएगा. ठीक है. So as such ये conductance पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं. Yes, Shreyas. Yes, there's a lot of background noise coming, like tapping of the keyboard. Yes, miss. ज्यादा आ रहा है. Okay. बहुत ज़्यादा. Sorry. I think it's closer to this. It's me only. I'm just going down, scrolling through the PDF. One second. Let me just. Okay. I'll try to be come slow. ठीक है. Thanks for letting me know. Okay, so the reciprocal of resistance is called conductance. ठीक है, तो conductance is reciprocal to 1 upon resistance. Easy सी बात है. जैसे so conductance. One second, let me just write this. Okay. So जैसे conductance we are saying is 1 upon resistance. Resistance का क्या हो गया? What is the unit of resistance, guys? Anyone? Ohm. तो conductance का क्या हो जाएगा? 1 upon ohm. ठीक है. So 1 upon ohm मतलब ohm raised to -1 according to the rules of indices. So this is one unit of conductance. It can either be ohm raised to 1 या raised to -1 या 1 upon ohm. जिसको हम ये भी बोलते हैं, it's also called as Siemens. Okay. And इसका जो unit है ये मतलब the symbol is ohm raised to -1 ohm. Okay. So that's all we need to know about conductance. Now we do not write MHO for ohm. पहले actually ohm raised to जो -1 है, it's a reciprocal ना, उल्टा है ना, तो पहले ऐसे लिखते थे उसको, MHO लिखते थे. That was the way to say कि it's a reciprocal of resistance. But अभी वो नहीं लिखते. In fact, we have a new word for it, which is Siemens. Okay. फिर IV graph को देखना है. For a metallic conductor, yeah, Sumedha. For a metallic conductor, the ratio VI is constant for all values of V and I. Okay. In the sense, let's say हमने एक ग्राफ सपोज बना दिया. आप जैसे भी basically it's like a direct relation. Okay. जो रेशियो होगा V upon I, मतलब आपने सपोज ये आपका ग्राफ कैसे बनते जाएगा. I'll just show it to you. Let's say this is your x-axis, this is your y-axis. ठीक है. आपने V जो है वो x-axis पे डाला है और I जो है वो y-axis पे डाला है. Okay. तो सपोज V which is potential difference, इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट और उससे करंट जो है वो पास हो रहा है 5 एम्पियर. ठीक है. तो यहाँ हमने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50. यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30. ठीक है. सो लेट्स से 10 और 5 एम्पियर है तो उसका यहाँ पे होगा, राइट. This will be the notation. Wow, what was this? Everyone, please keep your cameras on. अचानक कैसे बंद हो गए सबके?
चलो चालू करो. Now let's say if I keep my like मैंने अगर दूसरी वैल्यू ले ली 15 वोल्ट्स ले लिया, ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि करंट जो है वो बराबर उसका हाफ ही आता है, विच इज 7.5 एम्पियर. ओके, सो लेट्स से दिस बिकम्स 15, तो ये बराबर ऐसे बीच में ही आएगा. सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि दोनों का रेशियो अगर V अपॉन I का रेशियो पकड़े तो 10/5 इज ऑल्सो 2/1. 15/7.5 विल ऑल्सो बी 2/1. अगर मैंने सपोज वोल्टेज ले ली 30 वोल्ट, तो मेरा करंट जो है वो समवेयर अराउंड 15 एम्पियर आएगा. तो व्हाट इज हैपनिंग इज इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हुआ है गाइस. मतलब क्या, तुम एक पर्टिकुलर सर्किट में क्या करोगे, you will keep changing the values of your potential difference, and you will keep seeing that the value of the current is also changing in a proportionate manner. ठीक है, मिस आई गॉट लॉक्ड आउट इसलिए बंद कर दिया कैमरा. ठीक है भाई, चालू रखो वापस. ओके, मूविंग ऑन. अब सपोज मैंने दूसरी वैल्यू ले ली, लेट्स से 40 वोल्ट्स, तो करंट आना है 20 एम्पियर. ठीक है, अब मैंने ऐसे 4 वैल्यूज ली. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज देयर इज दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड द रेशियो इज कांस्टेंट इन ईच केस. अगर इसका हम स्लोप बनाएंगे तो ये 4 पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करेंगे यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो यू विल सी व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन गाइस, आपको पता है, आई थिंक मोशन में भी आपने किया है कि whenever there is a direct relation, what happens, it will be a straight line slope. okay, like this. तो ये आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप बन गया है. ठीक है, इसको हम VI ग्राफ बोलते हैं बिकॉज इट इज बेसिकली यू आर प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ V एंड I. और ये जो कांस्टेंट रेशियो है, इसी को हमने, ये कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज द थिंग व्हिच इज कीपिंग इट कांस्टेंट, टेल मी. क्योंकि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो करंट तो फ्लो होना ही है, बट करंट जो है वो एक पर्टिकुलर वे में ही फ्लो हो रहा है. 7.5 लास्ट 5 मिनट्स में क्या क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, यही हुआ. आई कीप रिवाइजिंग, तो ध्यान दे. ठीक है, ये देख नील, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया. एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया, वाई एक्सिस पे करंट लिया. तो वोल्टेज मैंने पहले 10 की वैल्यू में मैंने पकड़ा कि करंट है 5 एम्पियर. तो अगर मैं 15 की वैल्यू लेती हूँ तो क्या आता है 7.5. मतलब 10/5 का रेशियो क्या है 2:1. तो 15/7.5 का भी 2:1 आएगा. अगर 30 लूंगी तो 15 आएगा, 40 लूंगी तो 20 आएगा. बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि V/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह रहा है. आप जितनी भी वैल्यू बदल लो, उसका रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. सो द थिंग इज, इसके वजह से this constant ratio we have through Ohm's law, given it the name resistance, because कितनी भी आप voltage change कर दो, one thing is constant which is keeping the current in a particular range, and that is resistance, right? Resistance is keeping the current वही उतने ही proportionally उसको increase करने दे रहा है, ऐसे ज्यादा नहीं. so इसीलिए वो resistance हो गया. तो ये आईवी ग्राफ कुछ नहीं है गाइस. आईवी ग्राफ यही है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो आईवी ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं एक मेटालिक कंडक्टर के लिए. समझ गया है ये? Yes, miss. इट्स नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट. ठीक है, तो आपको वो लोग यही बता रहे इवन इन द टेक्स्ट बुक. इनफैक्ट यहाँ पे मैंने थोड़े वैल्यूज लिए, वहां तो ऐसे वी आए और जो है आपका स्लोप ऐसे बनेगा. ये जो स्लोप है which is the constant, it the slope represents resistance. ठीक है, so for a metallic conductor the ratio Vi will be constant for all values of V and I. If a graph is plotted for current I against potential difference V, we get a straight line passing through the origin. Slope of IV graph, ठीक है, इसका मतलब the slope of IV graph is the change in current upon the change in so guys basic, oye, y'all can hear me now guys? Yes, miss. Okay, I got a message that I've been signed out. I need to just inform Riya ma'am कि आप जो है 4:15 को लीजिए.
हाँ, सो गाइज ये स्लोप ऑफ आई वी, अभी आर इज वी अपॉन आई, बराबर है कि नहीं? आर इज व्हाट? वी अपॉन आई। तो अगर आई अपॉन वी रहेगा, हेलो मैम, रिया मैम, आप 4:15 को चालू करो ना। नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन आउट हो गई। ये चल रहा है फिजिक्स लेक्चर, और सर ने भी एक इंग्लिश सेशन रखा है रैन वालों के साथ, तो उनका भी थोड़ा जाएगा आगे तक, ठीक है? या ओके मैम, थैंक यू, बाय मैम। ओके गाइस, सो द थिंग इज, ये हो गया। सो मैं ये बोल रही हूँ कि आर इज वी अपॉन आई, इस चीज को समझो। तो अब मुझे ये बताओ कि आई अपॉन वी क्या हो जाएगा? इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ आर, मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर, बराबर है? तो यहाँ पे वही लिखा है कि slope of IV graph, the slope of IV graph will be I upon V, which is the reciprocal of the resistance of the conductor. इसको हम क्या बोलेंगे? What is the Yes, reciprocal of but it is conductor? delta I upon delta V, right? Yeah, delta means what? Change in The change in the change in the current and the current potential value difference. upon the change in the potential difference. Yes. Okay? So it's just कि तुम न्यूमरेटर में क्या ले रहे हो, डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हो, ठीक है? तो उसका जो है वो स्लोप थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ओके, बस इसमें इतनी ही बात है और कुछ नहीं। What is the limitation of Ohm's law? Ohm's law is obeyed only when the temperature of the conductor Not a is universal constant. law. Okay, so that is one limitation which you should know. Why? एक और Because है ना? एक भी है। ओके, ऊपर दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे तो एक ही है मेरी बुक में। और क्या दिया है? Read it out. एक 3 ही लाइंस दी है। क्या? Ohm's law is obeyed only when the temperature of conductor remains constant, वही है ना? हाँ मिस। बस मैंने सुमेधा, यस मिस। क्या हुआ बच्चे? तेरी बुक में और कुछ है? ओके, आई डोंट नो। सो मिस एक्चुअली ना मैंने एक पीडीएफ में देखा था दैट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब सबके लिए यूज नहीं हो सकता इसके लिए, दैट टू ओमिक एंड नॉन ओमिक। yeah, there are two types of conductors. There are ohmic conductors and non-ohmic conductors. मोस्ट Yes, नॉन ओमिक क्योंकि ohmic conductors का ऐसे स्लोप स्ट्रेट होता है और non-ohmic का ऐसा कर्व होता है। या वील कम टू दैट वो, बट फिलहाल ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन ये है कि जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो विल द रेजिस्टेंस बी कांस्टेंट? नो, बिकॉज यू नो इफ द हीट इंक्रीजेस it will again give an obstruction to the flow of current, means it will increase the resistance will then not be constant, and that will result in a breach of Ohm's law. ठीक है, सो वो एक लिमिटेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो आपका नहीं है, ठीक है? तो इन एनी केस अभी हम लोग ने जो स्लोप का पार्ट किया, कंडक्टेंस किया, इसको फटाक से नोट डाउन कर लेते हैं। गाइस कम ऑन, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ कंडक्टेंस को एक लाइन में निपटा लो। ओके, conductance is nothing but the reciprocal of resistance, so you don't need to write it in like words or anything, you can just write it like this. Okay, and इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? ओम रेज टू -1, या इसको हम बोल सकते हैं ओम रेज टू -1, जिसका दूसरा नाम है सी, ठीक है? फिर आईवी ग्राफ, एक्चुअली ये वीआई ग्राफ होना चाहिए। IV होना चाहिए। मैम X वीआई कुछ और upon होता है Y. ना, वीआई ग्राफ आगे है ना नॉन ओमिक में। Miss, it is always the x-axis upon y. So I upon v. y upon x axis then. I x upon y, right?
Yeah, but then how do you name the graph is what I'm saying. I know it is V upon I, but वो graph को हम IV बोलेंगे कि VI बोलेंगे? IV. IV. The name of the graph is the, like you take the y-axis letter पहले और फिर x-axis, right? Yes, miss. आगे VI ग्राफ दिया है तो हाँ उधर V y-axis समझ गए. ठीक है, मेरा वो confusion था. How do you name the graph? Yes, but usually like we write the x, like the quantity on the x-axis upon y, or y upon x. So the graph का name you take y-axis पहले and x-axis नीचे. जो ऊपर है वो y-axis का I और V नीचे. The ratio is Yeah, VI because it V is upon like I. distance upon time graph, ना तो distance y पे होता है time x पे mostly. So in that case it is y upon x, but like in this case it is x upon y. Why? No, like we are confusing the ये with ये IV ग्राफ है, ठीक है. IV ग्राफ मतलब नेम ऑफ द ग्राफ सिर्फ I और V है जो वो लोग मतलब, बट the ratio that we are taking is x axis upon y axis. That is why I also got confused ना. देखना आगे श्रेयस, आगे तू देखेगा ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में. Yes, the I is plotted on the x-axis, right? No, it's on the y-axis. Because अभी तो next आगे देख पेज जो next experimental verification जो omit हो चुका है वहां पे देख VI ग्राफ है तो V is on the y-axis and I is on the x-axis. समझा? Yes, miss. Understood. So while this graph naming and the ratios are separate thing. तो अगर IV ग्राफ है मतलब I y-axis पे और V x-axis वैसे. ठीक है. सो ये हम थोड़ा सा से अपने हिसाब से भी थोड़ी ड्राइंग कर लेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि I और V जो है इनकी कोई भी आप क्वांटिटीज ले लो, क्या होगा वो लोग सेम आएंगे. एंड व्हाट यू विल सी इज that the ratio is going to be constant, so it will be a straight line slope like this. Okay, ये directly proportional है ना? yeah, it is directly proportional, which means the ratio is constant, so it's directly proportional. Okay, and this is for a metallic conductor. Okay, so you can see I don't need to write the or we'll write the keywords. The ratio is constant for all values of V and I. ठीक है. And so we get a straight line which passes through the origin. Okay, so the slope of IV graph is basically okay, ये y upon x ही है actually. Slope of IV graph represents what? It is the change in the current upon the change in the potential difference, which is nothing but the reciprocal of resistance 1 upon R. यही बात होगी. Okay, and इसका limitation ये है कि Ohm's law will only hold true when the temperature, so it is obeyed only if the temperature of the conductor remains constant. Obeyed only if temperature of conductor remains constant. Okay. इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है आप यू कैन हैव अ रीड थ्रू इट. इसमें बेसिकली वही करेंगे वो लोग, एम मीटर वोल्ट मीटर पे अलग अलग वैल्यूज लेंगे एंड दे विल सी दैट द रेशियो इज द सेम. ठीक है. वहां पे वो लोग ने VI ग्राफ की बात की है, बट इन योर सिलेबस I want to be very clear, graph of V versus I and the resistance from slope
Okay, so we should even go through this graph, guys. Experimental verification वाला graph है. Basically same ही है, guys. सिर्फ यहाँ पे अभी v को ले लिया है y axis पे और I को ले लिया है x axis पे. ठीक है, तो वो vi graph भी देख लेते हैं. Why to leave out something? So if you look on your experimental verification का vi graph, अगर v और I भी हम लेंगे तो again these are also directly proportional. इसका भी constant ही रहेगा. 2:1 will वहां पे आएगा तो ये 1:2. मतलब हमने पहले 2:1 एक्चुअली मैंने जो एग्जांपल दिया वो vi ग्राफ का था. IV ग्राफ में वो 1:2 हो जाएगा. रेशियो तो सेम ही रहेगा ना. It will just be a reciprocal. Okay, so a graph is plotted for V against I by taking V on the y-axis and I on the x-axis. Again, that will be a straight line which verifies the Ohm's law. Okay. Miss, Yes. is the slope, is the ratio of slope of IV graph the same as the ratio of VI graph? No, it won't be the same, Neil. The value will just be a reciprocal. Okay, अगर IV graph का suppose तेरा रेशियो आ रहा है 1:3 which is a constant ratio, तो VI ग्राफ वही चीज का क्या हो जाएगा 3:1. बराबर है ना. So this is VI graph. So VI graph में the thing is V will be on the y axis and I will be on the x axis. Again the constants constant तो आप देखोगे ही. Again this is going to be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका भी ऐसे ही स्लोप बनेगा. नाउ सपोज ऐसा तुमको ग्राफ दिया है तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू. तो लुक एट पेज, मेरे में 177 है. कहाँ दिया है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इन योर टेक्स्ट बुक? 180. Okay, 180. Wait, oh I have it. Yeah, 180. So here to find the slope of the straight line obtained on VI graph, take 2 points. So you know, I don't know if you all had this in 9th grade, but you just have to take 2 points. कोई भी 2 points हम ले लेंगे. Okay. And do you all know this, guys? कि slope कैसे find करते हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये याद है कि नहीं? Is the difference between 2 points on x-axis and the distance between Points on upon y-axis, y. right? Yes. Yeah. Yeah. So वैसे ही अगर suppose ये लोग ने वही बताया कि वो लोग ने points ले लिए से P और Q, because you are trying to find the value of the slope. So you take the points P and Q, draw the normals PA and QB on y-axis and PC and QD on x-axis. वही बात हुई. Okay, यहाँ पे हम normals बनाएंगे ऐसे y-axis और x-axis. Okay. वो लोग ने नाम दे दिया यहाँ पे CD और यहाँ पे AB. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ रीड द फ्रॉम द पॉइंट्स. ओके, हाँ ये हो गया. रीड द पोटेंशियल VA एट A एंड VB एट B. ओके, सो यहाँ पे आप पोटेंशियल, ये वाला जो पोटेंशियल है वो VA हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा VB. ओके, विच इज Y. दिस विल बी Y. ओके, Y के कंपोनेंट्स. And then similarly read, ये हो जाएगा ID, current at D, and this will be current at C. Okay. So if you want to find the difference between this or you want to find this slope, so what will the slope be? The slope, they are saying slope which represents resistance is slope of V versus I ग्राफ. ओके, यानी V के जो कंपोनेंट्स है वो न्यूमरेटर में आएंगे. सो लेट्स से VA माइनस VB अपॉन VA का करस्पॉन्डिंग IC है, राइट? VA का करस्पॉन्डिंग IC है. सो अपॉन IC माइनस ID. सो दिस इज अ चेंज और डिफरेंस दैट यू आर फाइंडिंग. सो दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल upon the change in current. That will give you the slope or the value of R. This is how you can find it through the graph. Okay, so they are also saying that greater is the slope, greater will be the resistance. मतलब जितना आपका
स्टीप रहेगा स्लोप उतना आपका रेजिस्टेंस ज्यादा। ये लिख लो guys. I'll resume with the next topic in 1 minute. Everyone just write it. फिर ओमिक रेजिस्टर्स और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स हम चालू करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के हिसाब से भी। डन गाइस? मैं just Yes, ma'am. दिस इज बेसिकली हम लोग को जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये ओमिक रेजिस्टेंस है। ओमिक मतलब क्या? दीज कंडक्टर्स ओबे hello ma'am. Hello miss.
Oh God. Guys, are you all there? Yes, मैं मेरा इंटरनेट पे ऐसे ही उड़ गया अचानक. So sorry, I don't know what it is. इतना सही चलता है every day. I don't know आज ही इसको क्या हो गया. Why is it acting like a resistance? I don't know. Ohm's law को बहुत seriously ले लिया लगता है वाईफाई. Guys, switch on your cameras, everyone else. Okay, guys. So we are done with this. Now let's finish ohmic and non-ohmic conductors, and so we'll be done for today's session. देखो, so basically ohmic इसका जो है वो टेबल ही अच्छा है, but ohmic resistors का कोई रीडिंग करेगा? श्रेयस, read ohmic resistors. Yes, miss. Ohmic resistors. The conductors which obey Ohm's law are called ohmic resistors or linear resistances. Examples are all metallic conductors such as silver, aluminum, copper, iron, etc., nichrome, copper sulfate solution with copper electrodes, and dilute sulfuric acid, etc., at constant temperature. For such, for such resistors, a graph plotted for potential difference V against current I is shown in a straight line passing through the origin as shown in figure 8.5, and the resistance R is the same irrespective of the value of V or I. That is, the ratio of V upon I is constant for all the values of V or I. Okay, so basically ohmic resistors के main points लिखिए तो क्या इसका main है कि firstly they obey Ohm's law. Okay, so ये Ohm's law को obey करते हैं. Ohm's law ही क्या है कि the value V and I are directly proportional to each other. So they obey Ohm's law and therefore they are called as ohmic resistors. ohmic Okay, resistors को linear resistance बोलते हैं ना? yes, also called as AKA, also known as linear resistances. Linear का मतलब क्या होता है? Anyone? What is linear? Parallel. Straight line. Straight. Right? Linear propagation of sound मतलब straight line. Light travels in linear मतलब straight line. So ohmic resistors को linear resistance इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसका graph plot होता है, since they obey Ohm's law, the slope is straight, it's a straight line. That is why उसका दूसरा नाम है linear resistance. ठीक है? इसके examples क्या हो जाएंगे? All your metallic conductors, okay? जैसे आपका है silver, फिर aluminium. If you don't want to write it, silver का क्या है? Aluminium का तो Al. Silver का क्या है symbol? Anyone remember? AG. Ag. Okay. Copper is Cu. फिर iron is Fe. All these metallic conductors. नहीं उनको बोला है 415. फिर then you also have these alloy. Alloy जो है nichrome. That is also an ohmic resistor. So nichrome, you make a note of that. And then copper sulfate solution, ये आपका electrolyte solution हो गया, right? So CuSO4 solution with copper electrodes. Okay. These are examples of ohmic resistance. Dilute sulfuric acid at a constant temperature. So ये आपके हो गए ohmic resistance के examples. Okay, and for such resistors, a graph plotted for the potential difference V against the current I is a straight line passing through the origin as shown in figure 8.5. मतलब आपका VI ग्राफ की बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट में किया. And the resistance is the same irrespective for V or I. As you know, the values keep changing, but the constant ratio will be constant. So ratio V upon I is constant for all values, which is obvious if it's following obeys Ohm's law तो वही होगा, इसीलिए तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है. तो यहाँ पे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है.
आप इसको सिंपली यही लिख सकते हो कि द VI ग्राफ is a straight line, okay, which means that R is constant, right? No need to even write that. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला हो गया. नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, रीड श्रेयस, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स. Yes, miss. Non-ohmic resistors. The conductors which do not obey the Ohm's law are called non-ohmic resistors or non-linear resistances. Examples are LED solar cell, junction diode, transistor, filament of a bulb, etc. For these conductors, a graph plotted for potential difference V against current I is not a straight line, but it is a curve. Figure 8.6 shows V versus I graph for the case of a junction diode. Note: for an ohmic resistor, it is necessary that the straight line on V versus I graph passes through the origin, but for a non-ohmic resistor, it is not necessary that the curve on the V versus I graph must pass through the origin. Okay, so we'll make a point, a note of this point, that the straight line in a VI graph for ohmic resistance must pass through origin. ठीक है, ये तो हमने लिख दिया. और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, बेसिकली ऑल द opposing points of ohmic resistor. Firstly, it will not obey the Ohm's law, okay, and इसका other name will be non-linear resistance, मतलब कोई straight line नहीं है इसका ग्राफ, it is a curve. So ये हो गया non-linear resistance. ये ना आपका short question है, तो इसको तो अच्छे से याद रखना, काफी easy भी है. इसके examples जो है वो क्या है, लाइट एमिटिंग डिवाइसेस, एलईडी, सोलर सेल. ठीक है, इसमें क्या है ना गाइस, टेम्परेचर चेंज होगा. आप सन का तो टेम्परेचर यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट. फिर जंक्शन डायोड क्या है, आई विल शो यू अ पिक्चर आफ्टर दिस नोट्स आर रिटन. आई विल शो यू 1 सेकेंड. देन ट्रांजिस्टर है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब है, क्योंकि फिलामेंट ऑफ अ बल्ब जो है इसमें ये होता है कि जो फिलामेंट है उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, एंड दैट इज व्हाई इट एमिट्स लाइट एज वेल एज हीट. नाउ फॉर दीज कंडक्टर्स, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका जो वी आई ग्राफ होगा विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, it will be a curve. Okay, it will be a curve. And the other important note is कि you don't need it to be passing through the origin. Okay, so the curve does not necessarily pass through origin. In some cases it can, but it's not a necessity. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स. सो ऑल्सो ऑब्जर्व फिगर 8.6. आप देख सकते हो कि इट्स क्लियरली अ कर्व, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. Moving on, the resistance of such a conductor, that is VI, is different for different, so it's not constant obviously. And what happens is, suppose you want to find the resistor at a particular resistance at a particular point in the graph. Okay, so let's see, ये आपका ग्राफ है. ओके, एंड ये आपका यहाँ पे ये V है, ये I है, और आपका जो कर्व है वो ऐसा कुछ है. ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, आपको कहीं भी at any point you want to find the resistance. Now this is not a slope कि आप y2 minus y1 upon x2 minus x1 करोगे. So what happens is you will make a tangent at this point. Okay, so if you want to find the resistance over here, what you'll do is you'll make a tangent. You know what a tangent is, circles में किया है. So what you'll do is at that point you'll make a tangent, and फिर आप क्या करोगे, the value of V upon I at that particular change of V upon I is called as a dynamic resistance. Why is it dynamic? Because it's not a constant resistance, it's the resistance which keep changing, so its value keeps changing, so इसको हम dynamic resistance करते हैं. So we'll make a note of this as well. So if you want to find the resistance of a conductor,
that is in a non-ohmic thing. So what you'll do, it can be obtained. You will have to find R by finding the slope of tangent. Tangent को highlight करो. The tangent drawn at that point, at the corresponding point. Okay. And that will again be change in V upon change in Y. And इस वाले resistance को हम क्या बोलते हैं? Dynamic resistance. Why is it dynamic? Because it is not constant. It will be different for different values. Since it is not constant. Okay. Now, Neil, I want you to read the distinction between ohmic and non-ohmic resistance. Blue The box. last paragraph is left, I guess. नहीं वही I kind of read it ना but Okay, miss. yeah. अच्छा अभी ओमिक रेजिस्टर नॉन ओमिक रेजिस्टर रीड मत कर, चलेगा. देख जो हमने लिखा है वही है. पहला पॉइंट है ओबेइंग ओम्स लॉ, ये नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ. ओके, वहां पे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, सो वील ऐड दैट पॉइंट हियर आल्सो. ओबेइंग ओम्स लॉ मतलब क्या, यहाँ पे V upon I is constant for all values. ओके, एंड इसका मतलब है कि V upon I is not constant for all values. ठीक है, इट्स जस्ट फर्दर वही चीज को डिटेल में लिखा है. ग्राफ is a straight line. This is not a straight line. We've already written that. Then the slope of VI graph is same at all values of V or I at a given temperature. Slope of VI graph is different at different values of V or I even at a given temperature, which is ठीक है. मतलब it's already सिर्फ यहाँ पे temperature ये पॉइंट ऐड हो गया है. सो यू कैन ऐड दैट. मे बी दोनों में टेम्परेचर इज द सेम, ओनली गिवन टेम्परेचर इज द सेम. एंड बाकी एग्जांपल्स में कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल है क्या? सिल्वर आयन, कॉपर नाइक्रोम, इलेक्ट्रोलाइट विद सूटेबल इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, जंक्शन डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. ठीक है, हो गया. मतलब ये कोई ज्यादा कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन. उसको सिर्फ एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है गाइस, ये हो गया लिख के. Okay, we'll be done. Okay. One second. I also want to show you what a junction diode is. So it looks something like this. Can you see over here? Yes, ma'am. Okay. Basically, it's two particular wires meet और उसको meet करने के लिए. But exactly इसका detail में you don't need to know. Basically, if you see one side is the anode and one side is the cathode. Okay, and हमें तो सेल की तरह ही रहता है ना ये जंक्शन डायोड? या सेल की तरह ही रहता है, kind of. Okay, yeah, continue writing. जिनका हो गया है, you all can leave, guys. I'll see you maybe tomorrow, day after. I'll see when I want to conduct new session. Miss, thank you, miss. Bye, guys. Thank you, miss. मैम कौन बुलाया? आयुष बोल. मैम ये पीडीएफ मुझे आप भेज सकते हो, क्योंकि शायद मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर था ना वो मिस हो गया, तो मैंने वो स्टार्टिंग का लिखा नहीं है. मैं ना पीडीएफ इसका बेटा मैं एक बार बना दूंगी ना, तो आई कैन ओनली मेक द पीडीएफ वंस आई हैव फिनिश्ड राइटिंग एवरीथिंग. तो सो मैम वंस मैं वी आर डन, सो व्हाट स्क्रीनशॉट यू ले सकता हूँ क्या? या नील, आर यू Okay, डन ma'am. राइटिंग? Yes, miss. ओके, ये देख आयुष. मैम एक मिनट, हाँ 1 मिनट में आया. मैम कौन है? एतांश. बोल बेटा.
मैम मैं आज का टेस्ट जल्दी दे सकता हूँ क्या? एक्चुअली वो स्नेहा मैम ने शेड्यूल किया है, सो इट डिपेंड्स ऑन आपका बायो लेक्चर कब खत्म होता है, राइट? हाँ मतलब बायो लेक्चर 1 आवर 15 मिनट्स में उतना में खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं दे सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे 5 बजे बाहर जाना था पर। कहाँ जा रहा है तू? हाँ कहाँ जा रहा है? मैम हम्म। वो तो अभी वो मेरे को नहीं पता, मम्मी पापा को पता है। अच्छा। Bye, guys. अह, Thank you. मैम नेक्स्ट पेज। तो एक बार आप देखती हूँ मिस को पूछ के हितांश वो, इट्स जस्ट अ बात कर मैटर लो ऑफ ना। 15, एक मिनट हितांश, तुम्हारा बायो लेक्चर खत्म कब हो रहा है? बिकॉज मैम को भी आज ज्यादा लेना था, शी वाज होपिंग टू फिनिश द चैप्टर, इसीलिए हमने 7 बजे रखा है। तो देखो कितने बजे तक खत्म होता है, विल सी। ठीक है, ठीक है मैम। अदरवाइज तो फिर कल तक दे दे, और क्या कर सकते हैं, कल सुबह दे देना। ठीक है, ठीक है मैम। बाय। बाय मैम। हेलो मैम। यस। मैम नेक्स्ट पेज आप दिखा सकते हैं? यस।